very warm welcome to all our listeners. Thank you for tuning in. I hope you will enjoy this podcast. Hi, Mahesh. Thank you for joining us on Bliss Business. It's good to have you. Thanks, Ashish. Thanks for having me here. Awesome. Let's get started. So, Mahesh, if you can tell us a little bit about yourself first, then we'll dive into your company. Okay. So I'm an entrepreneur now. I've been running a fintech into lending space from last 7 years now. And prior to that, I have had an experience working with multiple banks. So I started my career in late 2004. Since then, I've been working with banks. I've worked with multiple banks in various roles during my career journey. So I started from a basic sales profile, then moved to the anti-money laundering division. Didn't like the job much, so moved to investment research because that was very fascinating and interesting. Investment research, when I moved, that was a subprime era. Lots of job cuts were happening. Not a very good place to be. So somehow survived for 3 years out there, and then decided to move out, and then went into the underwriting and research. So my last assignment was with Barclays, wherein I was taking care of the fintech research piece, working for the strategies around the bank, that how bank can harness the fintechs, and that is where I learned the idea about starting my own fintech. Wow, very interesting. But why did you say anti-money laundering was not fun? Sounds fun. So yeah, when we started, like, it was more of a logical job wherein you were getting into the transactions, doing lots of research, tracing back the transactions. Hmm. But with the advancement of system, it became more sort of a desk job. So Oh, every alert and everything was being done by the system itself, so you have nothing much to use your brain. oh, makes sense. Makes sense. And how was this jump from corporate to startup? I mean, it was like, so it's like for some entrepreneurs, it's धीरे धीरे build up होता है, and for some other, Right. it's like नहीं आज करना है. So what was the transition for you? So, that was an era when fintechs was just emerging, and I had an opportunity to get into or involved into the fintechs at a very early stage. So I was given a responsibility wherein my leaders, they wanted to understand what is actually fintechs, what's happening on the fintech, and how a bank can harness the future fintechs, because they were somewhere thinking that fintechs are coming to hunt their business, right? So that was the time wherein I got an opportunity to speak with lots of fintech founders, the young fintech founders, interview them, speak to them, learn about journey, what actually they are building. So I got to know that it's not just a software layer which they are building. They are probably trying to change the complete ecosystem, Mhm. and that's where this complete things came into the mind, and I got excited to start my venture. Oh, nice, awesome. Now let's walk through the journey of actually how you started. So you mentioned you were looking into this, talking to the entrepreneurs, everyone else. So what was the first idea? You wanted to lend. Was that the first thing you wanted to, or how did you start? Then again, I started connecting back the dot. So my journey has not been very simple. So I started. I mean, I am from a proper village, not even a town, Okay. and I moved from a village to town, and then from town to a city, and then from that city to this Mahanagar, what you call like a metro city, right? Yeah. So I have seen all the phases of life, and I have seen this scarcity. Though we agree that India is a credit-starved society, but still, uh, there are opportunities where people are not aware. There is a need which probably bank wants to solve, but they can't solve because there is a challenge. So one being the Herculean task around the documentation. So what has been the thought for a common people, that whenever you'll approach for a loan, a bank will probably ask a lot of documents, which is almost impossible to arrange, right? So that's where they were kind of not interested in borrowing from bank. Mostly they were just borrowing it from relatives,
Lalaji is better, so just walk down to Lalaji's shop and borrow it. He'll just ask for a couple of things because he knows me since my childhood, so he'll probably lend me easier. But Correct. but they were somehow not understanding the business model of a Lalaji and what benefits the bank can bring on the table. So the first thought was to eliminate the documentation process. So I thought that how we can make it easier. What are the steps are there which can be cut through the technology, Okay. because technology is something which can play a pivotal role out there. So the first idea was to probably cut the onboarding processes, the time and the lengthy processes which are there, and then find out an alternative way of underwriting even those people who can't be underwritten because they have a very thin profile, right? Maybe they don't have a existing credit bureau, don't have that sort of jazzy incomes which they can showcase to the bank and impress them. So these were two thoughts with which we started. So in lending, so if I can summarize basically, so you guys lend, right, in terms of personal loan or any other type of, or what is the Right, category? Lending is the main business, right? right, right. Okay, so how does it work? So my background is very technical, right? Finance world, Hmm. I understand, but bits and pieces. So I'll ask very basic Hmm. questions. Okay, Sure, sure. so Yeah. so how does it work? Is it you are, uh, I'm assuming some part of NBFC for which you provide leads, or how does it work? So we are into pure play. So we work on two models. One that we already have our own NBFC license, so we lend from our own NBFC, as Okay, well as we are partnered with other NBFCs, wherein we work on business correspondence way. Like we are a loan service provider to them. So the role of a loan service provider is originating the leads, getting them converted into a customer, getting the disbursements done, as well as ensuring that the repayments are being done on time. So it's end to end process. So we generate the lead, and we are there until the collections are happening, the repayments are happening. understood, understood. And typically, what are you seeing, Mahesh? Like in last COVID से बात कर सकते हैं, before COVID, after COVID. Mhm. What is the, how does market look like? People are taking more loans, less loan. What is the typical amount? So yes, so before COVID, the digital lending was emerging, right? Okay. Though it has spreaded its arm quite widely, but still it was an emerging concept. COVID has given it a wing. Like people are now more preferring to borrow sitting at their homes. They have no interest going to the bank queuing up. Even banks have changed their modus operandi, wherein they are directly lending through complete digital way. So the borrowing have become a little easier, and I definitely can say that the demand has also increased over the period. So, what type of loans are these? People are So, using this for business or personal. I remember एक article I read. I think it has mhm. been up to a few years back or something कि people are taking ये सब loan, but वो iPhone लेने में जा रहा है. You know. No, not exactly. So, of course, iPhone की financing has become much more easier. तो उसके लिए you don't have to go for a personal loan. iPhone की financing में there are lots of companies. You just walk down to the showroom and वो फोन बेचने से पहले आपको लोन बेचना शुरू करेंगे कि वी हैव 0% EMI. तो उसका फाइनेंसिंग तो है बिकम मच मोर इजियर. एनी वाइट गुड आप देखिए, लाइक even Hmm. in households also you see lots of fridge, TV, anything you go 0% EMI straight away, and you can just walk down with the He's product. ये बिफोर यू आंसर, ये 0% इज इट सही में 0% है या इसमें पीछे भी चार्जेस रहते हैं, क्या है मतलब, व्हाट इज द uh, रियलिटी ऑफ द 0%? So, in most of the cases, it is actually a 0% because they have some sort of arrangement with the dealer. ओके. उससे वो थोड़ा बहुत अपना चार्ज ले लेते हैं, जो भी है थिन मार्जिन में रखते हैं, बट क्योंकि इसमें डिफॉल्ट के चांसेस बहुत लोअर हैं. कोई भी एक जेन्युइन कस्टमर है जो एक गुड फाइनेंस करा रहा है और उसको रीपे कर देगा, कस्टमर को भी इजी रहता है कि चलो यार, रेदर देन अभी मेरे को पूरा देना है तो 3 EMI या 6 EMI में मिल जाते हैं. तो एक फाइल चार्ज टाइप का कुछ इनको देना पड़ता है जो कि अफोर्डेबल होता है. तो ओके. ऑलमोस्ट इट्स 0%. ओके.
Okay, yeah, and coming back to the now, sorry, the question. So, किस type के loan typically Yeah, see? Yeah. the major spike has happened on the personal loan side. So क्या हुआ है कि कोविड के बाद लोगों की थोड़ी हैबिट भी एक्सपेंडिचर की एक तरह से कहिए तो बढ़ गई है कि ठीक है यार, शौक भी पूरे करने चाहिए, बिकॉज कोविड में लोगों ने सीख लिया कि यार घरों में रह के, और जो भी अब जिनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे वो लोग हाँ, भी परेशान थे, जिनके में नहीं थे वो भी परेशान थे. So हाँ, what the trend I have noticed that people have started spending. ठीक है, अब उनको थोड़ा खर्चे करने में लोग विश्वास करने लगे हैं, चाहे वो बाहर जाना हो, टूर पे जाना हो. आई नो अ कपल ऑफ फैमिलीज हु हैव नेवर बीन फॉर अ ट्रिप इन लास्ट 20 years, but now they have planned and went out. सो ये एक पर्सनल कंजम्पशन पे ही ज्यादा ले रहे लोग, पर्सनल लोन की स्पाइक ज्यादा है विज विज द अदर लोन्स. नाउ post covid, the situations have changed because lots of businesses got shut, lots of the shops were there who has to kind of stop their businesses. They now need the working capital. So what they are doing, they are going into the market, coming to the NBFCs like us and borrowing more to increase their business, because I think it has bounced back in a double speed. So कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है वो बहुत तेज आगे बढ़ रही है. तो इवन द शॉपकीपर्स हु वर earlier having one shop, they now have multiple shops, and that is where they need more capital. So the demand is from both the side. One is for the personal consumption, second is for the business expansion also. and what is a typical इसमें I remember again news के through ही, because Mhm. not much into this segment, but news के through like these some Chinese companies which popped up, and Yeah. charging exorbitant rate, पता नहीं क्या क्या कुछ number थे. Right, तो इस right, right. typically what is the interest rate you guys charge? So I'll briefly cover Chinese लोगों की story. So basically, they have been habitual of catching the fish in troubled water, what we say. So China में the lending practices were very harsh. They were doing whatever they wanted to do. अपने मनमाने रेट पे 100 टका भी चार्ज कर रहे हैं, 500 टका भी चार्ज कर रहे हैं, जो वन पे आया. एंड किसी भी तरह का कोलेट्रल रख ले रहे हैं पर्सनल. इवन आई रेड एन आर्टिकल कि चाइना में दे वर कीपिंग न्यूड पिक्चर्स ऑफ द बोरोवर कि इफ इन केस यू डिफॉल्ट आई विल मेक दिस पब्लिक. So that kind of Wow. lending practices were there. Then what happened, चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में लिया, संज्ञान में लिया, एंड देन बहुत ही वहाँ पे रेगुलेट कर दिया उसको. और रेगुलेशंस के बाद जो फाइन्स थी, जो पेनाल्टीज थी, जो पनिशमेंट थी, उसको बहुत हाई कर दिया. इवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट का प्रोविजन कर दिया Wow. कि अगर आपने इसको वायलेट किया इस लॉ को. तो फिर इनके पास क्या था कि दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन. दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्रीडेटरी लेंडर वी कैन से. Now they were looking for a similar market, and unfortunately, they striked on India. So I also encountered and have a conversation with couple of them initially during my initial days when I was raising funds. So of course they came like an investor. They wanted to know what you're doing. But I realized that what they're planning to do is like something which will not work in India. Maybe they will start, or but they'll go to dust soon. And that is what has happened. They started with a very minimal capital, and gradually lots of Chinese companies just started venturing into it. So जो इंडियन कंपनी की लोन मार्केट थी, जो वहाँ पे 100 रुपया कोई इंडियन कंपनी कर रही है, वहाँ पे 500 रुपये चाइनीज कंपनी कर रही है. और चार्जेस में तो आई मीन अगेन वही मनमाना कि जो समझ में आ रहा है. कोई रेगुलेशंस को भी इन्होंने ध्यान में नहीं रखा. एनबीएफसी को इन्होंने लाइसेंसेस को बैक, जस्ट एक शैडो लाइसेंस रखा कि हाँ वी आर kind of regulated, we are compliant, but at the end they were not compliant at all. None of the compliances were being taken care by them. चाहे वो collective practices हो, ROIs हो, customer acquisitions हो, customer consent हो. लाइक बिना केवाईसी के भी लोन हो रहे हैं. कस्टमर ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो भी लोन हो रहे हैं. उसने गलती से ऐप डाउनलोड किया, उसको लोन दे दिया. पहला, Really? yeah, so पहला step what we do कि when we onboard a customer, then we would want to know you, that who you are. आशीष कौन है. Hmm. इनका केवाईसी करिए, इनका बैंकिंग लीजिए, इनका ब्यूरो फेच करिए, देखिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है. Hmm. और चाइनीज एप्स में क्या होता था कि पहला स्टेप आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगते थे कि आप बैंक अकाउंट नंबर दो, पहले आपको लोन दे देते थे. तो पहले
आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता था। आप जब तक समझ पाते कि ये पैसा कहाँ से आया है, तब तक कलेक्शन प्रैक्टिसेस चालू हो जाती थी। सो ओह। बेसिकली लोन्स वर ऑफ अ वेरी शॉर्ट टेन्योर, 7 दिन 6 दिन का लोन देते थे। तो जब तक आपको समझ में आए कि फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट दिस 2-3 thousand rupees, they would start calling you for the recovery. So ओह these माय were the गॉड। practices. The good part was that I think COVID, चाहे जितना भी बुरा रहा हो, एक तरह से इन लेंडर्स के लिए तो एक वो बन के आया, नहीं तो ये इंडिया की मार्केट को और खराब कर सकते थे, क्योंकि कोविड आया, लोगों की अर्निंग रहती थी तो लोग दे देते थे कि चलो ठीक है यार, पीछा छुड़ाओ इससे। हम्म। बट कोविड आया, लोगों की अर्निंग स्क्वीज हो गई, एंड देन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हुई। और इनकी प्रैक्टिसेस ये रहती थी कि समवेयर लाइक दे गिव यू 200 रुपीज, एंड देन दे स्टार्ट कि नहीं, 220 रुपए आपके बन गए, आप दीजिए मुझे। एंड देन दे प्रेजेंट अनदर कंपनी एट द बैंक जो कि आपको 220 रुपए फाइनेंस करने को तैयार थी। तो इस तरह करके ये धीरे धीरे अपना पूरा पैसा आपसे ले लेते थे, एंड ऑल यू आर लेफ्ट विद इज जस्ट इंटरेस्ट पार्ट, जिसको ये आपसे बाद में रिकवर करते थे। और ये प्रोसेस पूरा एक ही महीने में पूरा हो जाता था। तो एक महीने में समहाउ दे टेक देयर प्रिंसिपल एंड सम रिटर्न बैक फ्रॉम यू, एंड आपके पास अभी भी बहुत सारा बर्डन डेट का पड़ा है, और वो सारा इंटरेस्ट है। तो तो कितना ये इंटरेस्ट मतलब होता था टिपिकली? आई मीन इनके इंटरेस्ट ऐसे 1% अ डे होते थे। 1% अ डे इज लाइक 30% अ मंथ, 360% एनुअलाइज। ओह। और जो बेसिकली इनकी क्राइटेरियाज थी कि जैसे आपका 7 दिन का लोन है, तो 7 डेज के बाद वो 2% अ डे हो जाएगा अगर आपने नहीं दिया तो। ओह माय गॉड। यस। सो आई थिंक फिर आरबीआई ने और अदर रेगुलेटर्स ने इसको लिया, और काफी अच्छे एक्शन और क्विक एक्शन हुए उस पर। अभी भी इतनी धर पकड़, इतनी उसके बाद भी अभी भी वो मान नहीं रहे। कुछ ना कुछ नाम बदल के, कोई केमन की कंपनी बना के, कहीं से बना के कुछ ना कुछ एंटर करने की अभी भी कोशिश करते रहते हैं। तो एक अच्छा स्टेप हुआ है कि वी एज अ फिनटेक लेंडर्स एक फेस ग्रुप फाउंड किया है हमने, फिनटेक एसोसिएशन, जिसको जिस पे हम इस तरह की एप्स को अब रेड फ्लैग करना शुरू करते हैं। तो ओके। फेस एक एनजीओ है जो कि फिनटेक्स को रिप्रेजेंट करती है, और फेस फिर इनको, इन ऐसी एप्स को गूगल से भी कोऑर्डिनेट करके डिलिस्ट कराती है। ऐसी एप्स को आरबीआई को भी लिखती है, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुआ ओवर द पीरियड। तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो अब काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड है। तो एज ऑफ नाउ व्हाट इज महेश फॉर योर कंपनी पेमी, कितना आप लोगों ने लोन डिस्पर्स करा हुआ है और आपके क्या रेट्स हैं? सो लास्ट ईयर वी डिसबर्स्ड अराउंड 500 crores इन टोटल। और हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। सो व्हाट वी डू, वी engage the consumers at a very early ages, probably when they are new to credit, when they have a very thin credit line, they are into their first job, wherein they are probably not getting the required credit from the bank. Maybe they want to start their credit journey and looking for the right partner. So that's where we come in picture. So we start with a bullet loan, wherein we finance it up to 3 months, जहाँ पे हम उनको up to 28% एनुअलाइज चार्ज करते हैं। बट इफेक्टिव रेट वहाँ पे आपका 22% आता है, बिकॉज देर इज नो प्री क्लोजर चार्जेस। 22% एनुअलाइज। ओके। So my thought was always that let's keep it below the credit card rates. ये एक थंब रूल जब जिस दिन से मैंने इसको क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री रेट, में सो व्हाट वेंचर। इज द जी। क्रेडिट कार्ड रेट? क्रेडिट कार्ड की एपीआर आप लगा लीजिए 45-46% आता है। ओ रियली? कैसे मतलब? आई हाँ। डिडंट, कैसे मतलब, सो हाउ डज सो इट? क्रेडिट क्रेडिट कार्ड का आपने एक बार स्पेंड कर दिया, तो हाँ एक तो वो आपको 30 डेज का जो ग्रेस पीरियड देते हैं कि आप इसमें पे कर दीजिए। हाँ हाँ। अगर आपने नहीं पे किया, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डेट एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस पर लगभग 45% आरओआई के हिसाब से चार्ज लगते हैं। और एनुलाइज्ड। हाँ, एनुअलाइज्ड। और उसमें पहले आयरनी ये थी कि अगर आपने कुछ पार्ट प्रिंसिपल पे भी कर दिया, लाइक एक मैड अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं लोग 5%। हाँ हाँ हाँ। तो आपने वो कर दिया और थोड़ा ऊपर भी कर दिया, तो भी वो होल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहता था जब तक ये पूरा क्लोज नहीं हुए। सो सपोज करिए आपने 1000 रुपीज की शॉपिंग कर दी, और हाँ हाँ। नेक्स्ट मंथ आपने उसमें से 100 रुपये पे कर दिया, तो आइडियली आपको 900 रुपये इंटरेस्ट लगना चाहिए, बट वो पूरे पे लगता रहता था 1000 रुपीज पे। बट कुछ पिछले 2-3 साल पहले ये अपग्रेड हुआ कि चलो ओके, नाउ नाउ ओनली ऑन द लेफ्ट ओवर बैलेंसेस यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट।
तो ये हो गया, बट स्टिल द चार्जेस आर कमिंग समवेयर 46-45%. So my thought was that let's keep it below it, because I knew that since we are also a new age lender, borrowing for us would be challenging from the market, and maybe it will come quite dearer, because finance industry may, it's your goodwill which fetches you a lot of benefits over the period, and to make that goodwill you need to spend time, right? So So out of this महेश NBFC like 500 mhm. करोड़ में से आपकी बुक्स में से कितना गया? हमारा 50% हमारा था, लगभग 220 करोड़ हमने अपनी बुक से किया था, एंड Okay. टू रेस्ट हमने किया था अदर एनबीएफसी के साथ करेस्पॉन्डेंस जो पार्टनर बन के. जो हल्के वाले लोन थे वो अपने पार्टनर्स को दे दिए ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. सबके साथ सारे प्रोडक्ट अलाइन है. एक्चुअली ओनर्स तो हमारा ही रहता है, तो अगर वो लोन भी खराब होते हैं तो हमारा गुडविल खराब होगा, द पार्टनर विल नॉट डू बिजनेस. एंड एट द एंड, एक पहले आपने सुना होगा फर्स्ट लॉस डिपॉजिट गारंटी मॉडल भी हाँ. है. तो फर्स्ट लॉस डिपॉजिट गारंटी मॉडल पे भी हम काम करते हैं. तो एट द एंड अगर वो लोन खराब होता है तो दैट्स आर ओनर्स, वी विल हैव टू पे बैक अच्छा, एंटायर अमाउंट या सर्टेन entire चीज? amount, entire amount, mostly entire amount. Okay. And so let's go step back a little bit. How what is the Mhm. process to become an NBFC? What did you guys do? पूरा गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, so उसमें how was your journey? How did you started, applied, capital Yeah, raising, etc. yeah. So there has been, I mean, there has been an interesting journey. So I started the tech company, fintech one, and then I was looking forward for the capital. I met with a couple of gentlemen, pitched at various forums, some angel networks forum, to lots of VCs also, and initially was refused, because the model was not very promising to some of them, and probably people were thinking that who would be borrowing like 5,000 to 10,000 rupees, and uh, what is the future of this loan, and why would somebody borrow this a small amount? There were lots of similar questions. So it was not entertained by the industry initially, so it was difficult to raise funding. But yeah, a couple of those angel investors who has listened my pitches and who has questioned me a lot, after an year or so, when I was probably progressing, so MVP हो चुका था, and validation हो चुका था, we were growing. तो वहाँ पे then I met with a group of gentlemen जो हमारे साथ एक पिच सेशन में थे, and they said कि नहीं, आपने काफ़ी promising grow किया है, and we would like to reevaluate you again. सो आई वॉज फॉर माई छुट्टी एट सिंगापुर. वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई इनसे वापस से. एक संडे को मैंने कहा कि आई एम फ्री इफ इन केस यू वांट टू कैच अप. तो वहाँ पे फिर मैंने उनको अपने प्रोग्रेस के बारे में बताया कि दिस इज़ व्हाट वी आर, यहाँ पे पहुँच गए हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव प्लान नाउ. सो दे गॉट इम्प्रेस एंड दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनिशियल 2 million विद अस. दे कमिटेड कि हम 2 million तक आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे. 2 million उस टाइम पे 12 करोड़ रुपए होते थे. तो जब हमने फंड रेज कर लिया, तो नाउ वी रियलाइज दैट वी शुड हैव एन एनबीएफसी. सो वी स्टार्टेड इवेलुएटिंग कि क्या हम एक्वायर कर लें क्विकर वे, बिकॉज कई सारी एनबीएफसी सेल पे थी. सो क्विकर वे इज टू एक्वायर वन एंड स्टार्ट जर्नी. But then after evaluating a couple of NBFCs, we realized कि acquisition is not the right way. Let's go for a fresh license. So we applied for a fresh license in 2019, early 2019. There is a complete process. It is a defined process. Nobody can probably fasten it or maybe reduce the journey. ये complete stage wise process है. आपको ये करना है, वो करा, हमने submit किया, and then we got the approval. 6 महीना लगा था हमें अप्रूवल मिलने में, 6 से 7 महीना. वो जुलाई में we got the approval, जून एंड में, right? So is it any? They also have a requirement. You have to have this much capital, or first you apply for Yes, yes. NBFC and then you go for raising No, capital. no, How no. does So it work? capital, 2 crores का capital at that point in time was the basic requirement, कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए होती थी. और उसके अलावा फिर आपको ये जो प्रोफाइल्स हैं, जो प्रोमोटर्स बनने वाले हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइलिंग चाहिए आपको, कि उनके ब्यूरो स्कोर्स अच्छे होने चाहिए, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए. आई मीन आरबीआई वांट्स टू नो कि यू वुड बी एबल टू probably run this in your own capacity. So that's why you should have the right minded people along with the capital, and then only you would get the approval.
Understood. And the thing is that they'll not let you do any business in that company until either they say yes or no. तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता या आपका रिजेक्ट नहीं हो जाता, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते उस एंटिटी से. ओह, तो 6 महीने तक मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे थे? सो हमारा वी क्रिएटेड अ फ्रेश एंटिटी, सेपरेट एनबीएफसी है, तो इट्स नॉट दी ओनली एंटिटी. वी हैव अ टेक एंटिटी विच इज अ फिनटेक विच इज आई वुड से द पेरेंट आर्म, एंड देन वी हैव अ सब्सिडरी विच इज लाइक एन एनबीएफसी. तो एनबीएफसी को हमने फ्रेश एंटिटी क्रिएट किया और उसमें अप्लाई किया, एंड दिस इज हाउ इट वर्क. अंडरस्टूड. वेरी टीडियस, साउंड्स वेरी टीडियस इन प्रोसेस. इट इज लिटिल, हाँ, काफी थोड़ा है टेढ़ा. आई मीन दे आर वन ऑफ द टफेस्ट रेगुलेटर इन इंडिया, Yes. आरबीआई. And then after getting the license, everything, so how did you go about raising capital for NBFC? Yes, so once you get the license, then usually you'll have to put some more money in your own capacity, bring in from your existing investors, promoters, so that you can build some initial book. एक बार Okay. जब book बन जाता है, then you can place that book and borrow from the NBFCs, wholesale NBFCs से. You can reach out to the banks also. So then the journey started. अब ये तो ongoing process है. आप ऐसे business में हैं, you'll always have to raise debt for lending onward. And in order to borrow from the market, you should have that asset quality, like आपकी loan book अच्छी होनी चाहिए, performance अच्छा होना चाहिए. Then you can go ahead and raise from the market. So that's what we are doing now. Okay. So what is your, I think कुछ इसमें एक metric होता है ना, which is I'm forgetting the name, कि 1-2%, 3-4% कुछ default rate whatever it's called. तो वो हाँ, आप या लोगों या का, what is सो your that? उसमें आई थिंक उसमें एक आपका डिफॉल्ट रेट तो सबसे क्रूशियल मेट्रिक है एनी लेंडिंग कंपनी के लिए. तो डिफॉल्ट रेट इज बेसिकली कि आप अगर 100 रुपीज लेंड कर रहे हैं, तो उसमें से कितने ऐसे पैसे हैं जो वापस नहीं आ रहे हैं. इज इट 2 रुपया, 2%, 4%, 5%, 10%, क्या है. तो आप कोई भी सक्सेसफुल एनबीएफसी इसीलिए है कि वो अपने डिफॉल्ट को कंट्रोल कर पाई है. रेस्ट ऑल इज नॉट दैट बिग चैलेंज, लाइक कस्टमर एक्विजिशन, मैनेजिंग, रेजिंग डेट won't be that challenging. The biggest challenge is that control the defaults, because at the end you don't know the intent of the customer, right? Okay. And there are unforeseen situations also. जैसे कोविड एक सिचुएशन था जिसमें defaults have spiked on. So even people have had money into their accounts, but they were not preferring to pay any EMIs because they were keeping it for their rainy days. किसी को certainty ही नहीं थी कि how the road looks like ahead. कंप्लीट विजिबिलिटी गायब थी. तो लोगों को था कि जो है अभी अपने लिए बचा के रखो. सो नो वन वाज इंटरेस्टेड इन पेइंग द ईएमआईज. इवन जो मोरैट का स्कीम आया, गवर्नमेंट ने बोला कि मोरेटोरियम दो लोगों को. सो इवन दोज हु हैज अ हेल्दी बैंक स्टेटमेंट, दे आल्सो अप्लाइड फॉर मोरेटोरियम कि यार मेरे को भी दे दो मोरेटोरियम, ये पैसे तो मैंने अपने बाकी खर्चों के लिए रखे, फ्यूचर लुक्स अनसर्टेन. तो इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं. तो इसलिए आपको डिफॉल्ट्स को ही मतलब प्रेडिक्ट करके कंट्रोल करके रखना ही सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है एनबीएफसी में. सो सिंस इंसेप्शन वी हैव मैनेज इट क्वाइट वेल. हमारे डिफॉल्ट्स अभी भी बिलो 3% रहते हैं. मार्केट डिफॉल्ट रेट्स की हम बात करें तो एवरेज 5 to 6% चलता है. बट बिकॉज वी हैव सेक्टर agnostic पीपल, I myself have been involved into the lending and banking for last almost a decade. So we are very, very particular about underwriting. We go through a very stringent process, though it's quicker using the technology, but we don't kind of compromise on any matrix or any pillar when it comes to underwriting. Understood. And typically, you guys are lending in tier one, tier two, tier three cities का है, or any particular trend in this area, or So we started with metros, all okay. four metros, and majority customer हमारे मुंबई और दिल्ली एनसीआर से आना शुरू हुए. And then we started with tier two. I would not say tier two. They are also like metros, Bangalore, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पुणे. So they are almost metros. तो next phase में हमने इन जगहों पे extend किया. Now we have moved to another level wherein we have gone to cities like Ahmedabad, Surat, Vadodara, uh, Lucknow, Patna, and we are seeing lots of customer traction from there. So currently we are active in 90 cities, which is primarily tier 1 and tier 2 cities. The intention is to probably expand our services to 900 cities once we are a grown company. And if I remember correctly, Mahesh, I don't know if it is applicable here, but in US it happens. I think the
your loan book, you can further securitize and sell it off, right? So is this also a trend here? You guys also do it? Yeah, so not selling it off because we are borrowing from the market, so we place it majorly, so we don't sell it off. Uh, Okay. uh, so we have, say, suppose 10 crores loan book, so we will place this to an NBFC and we'll try to borrow another 8 crores from them. Okay. 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 So in all this, everything sounds very till now, seamless, effortless. चीजें हो रही हैं, everything is perfect. What are the biggest challenges, Mahesh, in this No, business, and no, what no, no. have you seen? Seamless तो और effortless तो बिल्कुल भी नहीं. Like there is a lot of sweat and blood. I would say every night's आपको मतलब entrepreneurship journey you've been a part, you know it. Like you always have those sleepless nights. एक 8 घंटे की shift नहीं है, ये 7 घंटे की. Your brain is always working, right? आप 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हो somewhere. There is no weekend, no family. So तो कुछ आप स्ट्रगल तो challenges रहता आप है. बताओ ताकि अब लोगों को थोड़ा reality भी touch होए. So challenge itself, I mean, when it comes to lending itself is a very responsible business. So एक ये अपने आप में ही एक challenging business है. आपको किस कस्टमर को देना है, किसको नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना है. If you go to the other industries, for an example, you are an online retailer, you are a Flipkart or you are a Amazon. Any customer whosoever has the buying capacity can come and buy your product, right? You Amazon and Flipkart, they don't choose who would be their consumers. But in lending business, it's reverse. Like a lender will choose who will be their customer, because if 100 customers are approaching you, you will not be able to give loans to everybody. You'll have to be choosy that who all are going to repay back, only they should be offered the loan. So identifying the right customer, lending them, and mitigating all sort of compliances. So सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे हो गया वो कम आरबीआई और बाकी compliances हो गया. आपकी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है, तो दैट इज अनदर थिंग विच ऑल द लेंडर्स एंड ऑल द डिजिटल कंपनीज विल हैव टू फॉलो. सो कंप्लायंस एक बड़ा चैलेंज है. उसके अलावा जो आपने देखा होगा, आप सुन रहे होंगे कि ग्लोबल लेवल पे रेट्स रिवाइज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हम्म, मार्केट हम्म, में, तो हम्म, आपकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ती रहती है. सो लाइक इवन इफ आई लेंड यू एट से 20% and I borrowed it for say 15%, now the rates have got revised, my lender will change it to 16%. हम्म. But I can't change it to my customers so frequently because I have got into a retail agreement, and changing this might make my customer furious. So these are the stuff which you'll have to kind of face day to day. So raising further money for deployment, identifying the right customer, lending them and collecting in polite way, and then meeting out Polite all way sort is of the critical one. of course, it's a polite way only now. You can't even talk loudly to a customer. They'll complain, and then RBI will come and ask for the explanation. So do you have recovery teams? It's like I am assume it's third party. No, so what we have done, because what my thought was that you have better control when team is in house. So Okay. all the collections team we have built in house. We don't want any malpractices to happen. We don't want any harsh practices to happen. We don't Hmm. want to lose the customer who can be a long paying customer for me because he is struggling with some financial challenges currently. So just to control that, we have kept a complete team in house, and we have a right mechanism over there. So that's where I think we are doing fairly good in the industry. Okay. And we keep seeing मतलब कितनी कंपनियां हैं, Hmm. पेटीएम भी लेंडिंग में आया हुआ Yeah, है yeah, और भी है. yeah, yeah. एवरीवन इज वांट्स टू लेंड. तो इसका Hmm. चक्कर क्या? एवरीवन वांट्स टू लेंड. सो आप इज इट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल? व्हाट्स द रीजन पीपल वांट टू गो? एंड देन अदर साइड इज द स्ट्रगल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर लाइक यू. सो ये व्हाट्स हैपनिंग? सो सी एट द एंड आई थिंक जो बैंकिंग से नहीं थे, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके शुरुआत कर ली, जो आईआईटी पास थे कि हाँ, हम पेमेंट गेटवे चलाएंगे जी और उससे पैसा बनाएंगे. यू हम्म, माइट हैव सीइंग अश्नीर ग्रोवर सेइंग कि भैया पैसा तो लेंडिंग में है. तो हाँ, दैट वाज द कोर थॉट फॉर मी आल्सो. आई नो कि कोई भी बैंक बिना लेंडिंग के पैसा नहीं बना सकता है, एंड इफ इन केस यू आर वेंचरिंग इनटू अ सिमिलर बिजनेस, तो आपके लिए भी लेंडिंग हैज टू बी योर कोर. बाकी ये सब
ज्ञान फैलाने से नहीं पैसा आएगा, इससे फिर खाली खर्चे होते हैं, क्राउड क्लाउड का बिल दे दे के आप उतना भी नहीं निकाल पाओगे। तो सबको ये समझ में आ गया, तो जिसके पास भी डेटा है, तो अब हर कोई लेंडिंग में आना चाहता है, चाहे वो पेमेंट गेटवे कंपनी थी, चाहे वो अकाउंट एग्रीगेटर थे, रिटेल अकाउंट एग्रीगेटर थे, कुछ भी थे, ई कॉमर्स थे, एवरीबडी वांट्स टू डू लेंडिंग। And there is a hot news, big daddy like Geo is also coming into lending. यस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, वो Yeah, अलग yeah, से yeah, yeah. स्प्लिट होगा। Yeah, so of course there is money in lending, and that is the only way in financial services which makes money for you. Otherwise you go on to other way. आपने देखा है एमडीआर को लेके इतने challenges रहे हैं, यस। तो जो पेमेंट गेटवेज के थे, जो जो मैकेनिज्म पैसा कमाने के, वो तो खत्म ही हो गए। फिर यूपीआई आ गया, यूपीआई में उन्होंने एमडीआर जीरो ही कर दिया, रुपए कार्ड आ गया, एमडीआर जीरो ही कर दिया, तो या। काफी कंपटीशन आ गया उधर। अब आप आपको कोई मर्चेंट पे करने को तैयार ही नहीं होगा, आप उससे 1% या 0.5% मांगो, नहीं देगा, तो वहां पे तो बिजनेस स्किल हो गया। बट ये है कि उनके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, सो दे आर बैकिंग ऑन दैट डेटा, दे आर वेंचरिंग इनटू लेंडिंग। एंड देन यू मेंशन बिग डैडी, अब जियो आएगा, वो तो फिर मतलब क्या होगा मार्केट का? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। वो तो जियो वोंट ऑपरेट इन फ्यू परसेंट मार्केट शेयर, राइट? इफ ही राइट, एंटर्स राइट, इनटू दे समवेयर वुड, तो वो राइट, पूरा राइट। उठा लेता है बल्क में। तो वो पिज्जा का मेजर पाई चाहिए उनको, हाँ। ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट हाफ तो मिनिमम है। So actually, I'm not much concerned, to be very honest, because आप हिस्ट्री देखिए तो हमारे पीएसयूज बैंक्स को पहले ले लीजिए। आप पीएसयूज के देखिए तो 60% से 70% बिजनेस पे कब्जा था उनका पहले, और भी ज्यादा, आई वुड से 80%। आप 10 साल पहले चले जाइए, और थोड़ा पहले चले जाइए, देन प्राइवेट बैंक्स केम इन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस टू सम एक्सटेंट। धीरे धीरे इन्होंने अच्छा मार्केट बनाया अपना। उसके नीचे की लेयर में आप बड़ी एनबीएफसी को ले लीजिए, बजाज हैं, हीरो फिनकॉर्प है, श्रीराम है। आप और नीचे आइए, मुथूट है जो गोल्ड लोन वगैरह करती हैं। इन सबके हाँ। पास बिजनेस का एविडेंस है। हर कोई कहीं पे ऐसा नहीं स्ट्रगल हो रहा है कि उनको बिजनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, ओके। क्योंकि इसमें लेंडिंग में राइट ग्रोथ इज द वर्ड विच वी यूज। इट्स नॉट जस्ट ग्रोथ, वी यूज राइट ग्रोथ। तो राइट ग्रोथ के लिए ठीक है, देर आर चैलेंजेस, बट स्टिल दे आर गोइंग ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स ईयर ऑन ईयर। सो ये महासागर है जो इंडियन मार्केट है ना, इट्स टू बिग। It's too big for all of us. So there are 100 odd banks, 1000 odd NBFCs, उसके अलावा क्रेडिट सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बट स्टिल आवर सोसाइटी इज क्रेडिट स्टाफ। ओ। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वी सी दैट डेफिनेटली there will be some disruption in the market, but since Jio is venturing into it, but that will be for good. ओके। एंड इन दिस uh, segment, what is the typically, I'm assuming it's a profitable business model, that's how people are able to lend and grow, you know. Right, yes. Okay. So from your perspective, Mahesh, what is the best asset class in lending? You know, what is the best sort of business model in lending which you thought ki nahi yaar, maybe मेरे को पहले उस type का कुछ try करना चाहिए था, as you mentioned, like lending against gold or something, you know, which Yeah, caught your you've eye. already taken the name. So अगर आप बेस्ट एसेट क्लास की बात करें तो गोल्ड लोन इज द बेस्ट एसेट क्लास। आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाने हैं, ना ही आपको कस्टमर को प्रेशराइज करना है, बिकॉज उसका Hmm. वैल्यूएबल आपके पास प्लेस्ड है। Hmm. उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो नहीं देगा तो आप चले जाओगे। तो दिस इज वन बेस्ट कैटेगरी, आई वुड से। बट वहाँ पे क्या है कि इट कैन नॉट ऑपरेट इन अ डिजिटल वे, एंड that financial inclusion I don't see out there. So that's why वो मेरा preferred choice नहीं रहा कभी भी। It will always grow on a traditional model, branch model पे। कुछ innovations करने की कुछ कंपनियों ने ट्राई किया, बट उसमें मार्जिन्स वैसे थिन हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई है, एंड ये वॉल्यूम में नहीं हो पाता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इन सच नीड कि वो आपको अपना गोल्ड लाके प्लेस करेगा। सो इसलिए आई थिंक दैट वाज नॉट माय प्रेफर्ड चॉइस। बट अगर आप स्टेबल और सबसे स्टैंडर्ड, सबसे सेफ क्लास की बात करें तो एसेट्स में गोल्ड इज कंसीडर टू बी द सेफेस्ट, गोल्ड लोन। तो बट आज के डेट में कोई क्रिप्टो करेंसी पे लोन नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा, किसी पे को क्रिप्टो, एक दो बिटकॉइन ऐसा कुछ? नहीं,
काफी बज हुआ था उसके अराउंड, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी हाँ किया था. इवन वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ प्रपोजल फ्रॉम द क्रिप्टो गाइस की हमारा ये ब्लॉकचेन चलता है, ये चेन चलता है, ये यूजर है, ये इथेरियम है, आप इन पे लेंड करो. बट हाँ. उनके फ्लक्चुएशंस रेट देख के आप कभी उस पे एक आप कंसेंट नहीं बना पाओगे. सो हाउ यूजुअली इट वर्क, सो यू हैव अ 100 रुपीज गोल्ड वैल्यू, Hmm. you come to me, I'll lend you 60 rupees because I know कि gold कितना भी गिर जाएगा तो it won't go below 60 rupees in 1 month, 2 month, 3 months or 1 year. सही है. On the irony is probably it will go up, so 100 rupees gold का value 120 rupees हो जाएगा tomorrow. Mhm. But in crypto what was happening, it was falling in such a sharp steep जो डाउनफॉल होते थे उसके कि 100 रुपए का क्रिप्टो हो सकता है 2 रुपए का हो जाए नेक्स्ट डे. तो उसका कोई कंट्रोल नहीं था, तो इसलिए वहां पे लेंडिंग अगेंस्ट क्रिप्टो, फर्स्ट तो आई थिंक इंडिया में अभी परमिशन भी नहीं है, इट विल बी कंसीडर इलीगल. आरबीआई विल कम एंड आस्क लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू इफ यू आर डूइंग इट. सेकंड है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. बिकॉज अगर मैंने 100 रुपीज का क्रिप्टो आपको प्लेज किया है, सो आई एक्चुअली बॉट इट फॉर 100 रुपीज, तो आई वुड एटलीस्ट वॉन्ट 30 रुपीज. बट इफ यू गो विद द क्रेडिट मॉडल, वो 30 रुपीज भी रिस्की है बिकॉज दैट क्रिप्टो कैन गो डाउन टू जस्ट अ 0 और 0.1 रुपीज. तो आपका तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा. इट जस्ट उसका प्राइस मूवमेंट बहुत ही बहुत ड्रामेटिक फ्लक्चुएटिंग, है. बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फ्लक्चुएशन है. Awesome. So now looking Mahesh, coming to a final sort of segment. So where do you see now अगले 5-10 साल क्या टारगेट हम्म. है आप लोगों के कि अब क्या अचीव करना है? 10,000 करोड़ का लोन बुक करना है, 5,000 करोड़ का, और कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी है? व्हाट आर द टारगेट्स यू आर लुकिंग एट? So we are now 9 million plus registered users हमारे पास, and close to 700,000 approved customers we have got. So we are backing on our consumers. We have seen with one product it is working very well. Now the thought was to be the first go-to lender for any of our consumers. So even if they are thinking of a consumer loan, they are thinking of a car loan, someday down the line housing loan, maybe education financing for their kids. So we should be the one to facilitate it, and that's the thought. So in 5 years the target is to expand our operations in 900 cities as I have indicated. Loan book size ka definitely the target is to grow as much as possible, so close to a billion USD loan book which we are targeting in next 5 years. And sort of one last thing, Mahesh, if you want to look back, Mhm. इतनी आइटम करी, एक्टिविटीज करी, अब इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी कल के भी यू कैन गो बैक इन टाइम एंड डू समथिंग डिफरेंटली, तो वो Mhm. कौन सी, व्हाट आर दोस एक्टिविटीज और थिंग्स यू वांट टू डू डिफरेंटली? So I think it's very difficult to say for me. I think because whenever we do in entrepreneurship, we do our best. So I can't say that this is what I have done wrong and I can go back and change. कुछ तो बताना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आंसर तो इसमें But चलेगा. yeah, there has been a couple of things, like we launched one product which was we named it Salt. काफी प्यारा प्रोडक्ट था. तो सॉल्ट में वी वर ऑफरिंग क्रेडिट ओवर यूपीआई. So what was happening that I realized that even if you're holding a credit card, you usually don't bring out your credit card to pay your grocery bill, smaller vegetables bill, and maybe you're having chai coffee outside. So smoke, so any smaller bill you would never prefer to bring out your credit or debit card and pay. So we thought let's probably capture this one. So we launched Salt, wherein we were giving you a limit, and you can spend that limit across the shopkeepers anywhere जहाँ पे भी scanner लगा है, and you'll get an itemized bill in 15 days. आपको फिर grace period मिलेगा, almost like a credit card. एंड देन प्रोबेबली आप उसको उसको बिल की तरह आएगा, आप 3 दिन में जमा कर देते हो, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा. आप नहीं जमा करते हो तो फिर डे 1 से इंटरेस्ट लगता है. सो ऑलमोस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, बट छोटे छोटे खर्चों को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा था. एंड देन यू नो दैट हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन योर chai and sutta every day, and maybe vegetables, grocery, doodh, anything. So it was very planned and very good product. Even I was using myself when I launched. So वो हमने लॉन्च किया था, but somehow it came into the RBI product violation, so we had to shut it. So what I would want to do in case if I get a chance to go back to the time, so probably
I'll seek RBI's permission as well as NPCI's permission so that I don't get in that soup जहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट कॉल बैक करना पड़े मार्केट से बिकॉज आई हर्ड लॉट्स ऑफ बैड फीडबैक पोस्ट दैट माय कस्टमर्स आर लिटरली क्राइंग दैट ओके फर्स्ट इट वाज सच अ नाइस प्रोडक्ट व्हाई डिड यू रोल इट बैक ओह, थोड़ा सॉल्टी हो गई सिचुएशन सॉल्टी आरबीआई हो गई सर में. But sounds very interesting, and yeah, या solve कर रहा है वो एक particular problem in that area. So या makes sense. Awesome, awesome, awesome. Thanks a ton, Mahesh, for your time. Any final thoughts, comments you want to share, from your perspective? No, that's all. We are here to spread financial happiness. So anyone who are willing to probably explore our services, they're welcome. And if they have any feedback, I'm reachable. My email ID is out there in domain. Google पे मिल जाती है. Send me direct feedbacks. I personally read them and entertain them. Awesome, awesome. I think एक ही demand आएगी, bring the chai sutta credit back. Uh, Certainly, yes. Yeah. awesome. Thanks a ton, Mahesh, for your time. It was pleasure talking to you. Same here, Ashish. Thank you and all the best.